Hello students, welcome back. Today I am here with DF block because I know you students are very much puzzled, scared, confused. Okay, how can we do the revision of this DF block? Because all the chapters are logical. But this chapter you have to do by heart. That is रट्टा मारना पड़ता है ना? लेकिन आज हम लोग इधर है to electrifying revision of this DF block with pattern answer, question answer discussion. So first, another 60 to 90 minutes, we will do this entire section and we will do it first with the revision of NCERT in a smart manner, not in a boring pattern. Okay, so if you want to do this energetic revision with me, please stay with me and let's start. And give me a moment to check my all the device. Okay, give me a moment. Okay, so let's start. The D and F block elements. I know this chapter is very much scaring for all of you both students because ये chapter आप लोगों को पूरा रट्टा मारना होता है, बैलेंस इक्वेशन लिखना होता है और अगर आप लोग बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखते हो देन क्या करना पड़ता है, आपका मार्क्स चला जाता है ना. लेकिन सम लॉजिकल क्वेश्चंस आर देयर, लेकिन स्टूडेंट्स उसी को अवॉइड करते हैं एंड आई एम टेलिंग यू दिस द कंफर्म 7 मार्क्स फॉर यू बिकॉज लास्ट जो मैंने बायोमोलिक्यूल का सेशन किया था तब भी मैंने बोला था वो भी कंफर्म 7 मार्क्स था, ये भी कंफर्म 7 मार्क्स है. ओके, सो first the chapter D and F block. First we have to know what is D and F block elements actually. Okay, actually this is जब क्या होता है पूरा जो periodic table, you know the periodic table from I think since class 9 you are studying that periodic table. In the periodic table, period 1 and 2 is known as S block because you know that the electronic configuration is ended with S orbital. Fine. Now, group 13 to 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, these groups are known as P block. Why? Because जो electronic configuration है वो P से end होता है, P orbital से. ठीक है. अभी जो बीच में है 3 to 11, 3 to 12, ये जो है पूरा ये है D and F block element. Among this D and F block elements, we know that period 6 and 7 में जो ग्रुप 3 है और हम लोग इसको मॉडर्न जो ग्रुप 3 दैट इज नोन एज F block. ओके, रेस्ट पूरा जो है दैट इज नोन एज D block. So S block is group 1, group 2 and P block is group 13, 14, 15, 16, 17, 18. Previously this all were in your syllabus but now only D and F block. Okay, and period 6 and period 7 में जो group 3 है एक ही प्लेस पे 15 elements are there, that is known as lanthanide actinides, actually that is F block, and rest पूरा जो है 3 to 12 जितना सारा है all are known as D block elements. Okay, D block elements. S block elements और D block elements का general electronic configuration क्या है? What is the general electronic configuration? D block का जो general electronic configuration है that is NS2 1 to 2 actually, N-1 D 1 to 10. ये है डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सबसे आसान सबसे इजी क्या होता है याद रखने के लिए, दैट इज आवर स्कैंडियम. वो जो पूरा 21 to 30
ठीक है, जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किए थे उसका याद रखो, तो फिर ये पूरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन लर्न। ओके, नेक्स्ट एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या होता है? एफ ब्लॉक का जो होता है दैट इज NS 1 to 2, ND 0 to 1, सॉरी N-1 होगा वो, N-1 D 0 to 1, N-2 F 1 to 14. Okay, clear? So this is our D block and F block का general electronic configuration. Fine, ठीक है? तो अभी क्या है पूरा, actually this is a brief. Actually you know that from class 11 this electronic configuration, I am just revising it to you. Okay, now हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या है देख लो. We have to learn this all. Okay, first the D block of the periodic table contains the element of the group 3 to 12, what I have told earlier. Okay, 3 to 12 जो है that is D block, in which the D orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods. सबसे बड़ा periods तो वही है ना, third fourth से जो start होता है. The F block consists of elements in which 4f and 5f orbitals are progressively filled. They are placed in a separately panel at the bottom in the periodic table. The names transition metal, that is जो D block का है that is known as transition metal, और जो बाकी का है that is known as inner transition. मतलब जो F block है that is known as inner transition metal. Transition metal and inner transition metal. Okay, ये है D के लिए है inner transition for D, और F के लिए inner transition. Okay, underline circles. Transition D, inner transition F. Fine. There are mainly 4 series of transition metal. Okay, क्या क्या है? एक है 3D series कैंडियम टू जिंक, 4D series इट्रियम टू कैडमियम, 5D series लैंथेनाइड टू हैफनियम टू मर्करी. Okay, and 6D series actinides and elements from rutherfordium to Cl. Okay, the 2 series of the inner transition metal, that is 4f and 5f, cerium to lutetium, thorium to lawrencium, are known as the lanthanoids and actinoids. So this is lanthanoids and this is actinoids. Lanthanoids, actinoids. Hopefully this one is clear. Lanthanoid, actinoid. Okay. Next, originally the name transition metal was derived from the fact there were chemical properties were transitional between S and P. Metal and non-metal के बीच में ये transitional है. Okay, that's why इसको बोला जाता है transitional elements. Now, according to IUPAC, transition metals are defined as metal which have, अभी transition का क्या क्या criteria है, we have to know that. So that criteria are, those criteria are, according to IUPAC, a transition metal are defined as the metal which have incomplete d subshell either in neutral atom or in their ions, zinc, cadmium and mercury. इन लोगों का क्या होता है? फील्ड D10 होता है. ठीक है, भाव सिंह, यस मैम, वेलकम भाव सिंह. जिंक, कैडमियम और मर्करी जो ग्रुप 12 में है उसका क्या होता है? D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. दे आर नॉट considered as transition element. Okay, full D10 configuration in their ground state as well as they are in a common oxidation state and hence are not regarded as transition metal. So this one is very very important. Zinc, cadmium and mercury, why these are not considered as transition element? Okay, however, being the end member of the 3D, 4D and 5D transition respectively, their chemistry is studied along with it. जैसे कि ये लोग है उस ग्रुप में, इसीलिए along with. Okay, the presence of partly filled D or F orbital in their atom makes transition element different from that of the non-transition element. Hence, transition element and their compound are studied separately. Okay. So, अभी क्या है? अभी ऐसे इन लोगों का D में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. We know D occupancy is 10 electrons. So, 1, 2, 3 till 9 तक इन लोगों का chemical activity they can show. That's why they can show variable valencies.
That's why due to this variable valency, it can show different type of nature like catalyst activity या standard इसका reactivity थोड़ा high होता है, lots of oxidation state होता है. Okay, various precious metal such as silver, gold and platinum and industrially important metals like iron, copper and titanium belong to the transition metal series. Okay, in this unit हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से इसका डिफरेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, फिर उसका जो पर्पस पे ये लोग यूज होता है, जो यूनिकनेस है, जो रिएक्शंस है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ जाते हैं. डी ब्लॉक का है, अभी क्या लिखा है देखो, फ्लैंक्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, है ना, ऐसा ही तो है, इधर है एस, इधर है पी, इन बिटवीन दिस इज डी एंड एफ, ऐसा ही तो है पीरियोडिक टेबल में, है ना, दैट्स अ फ्लैंक बिटवीन. द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनाल्टीमेट एनर्जी लेवल ऑफ एटम, डी ऑर्बिटल क्या रहता है, एक्चुअली डी ऑर्बिटल फाइनल नहीं रहता है, वो पेनाल्टीमेट रहता है, मतलब यू नो ना व्हाट इज पेनाल्टीमेट शेल, द सेकेंड टू द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल से पहले जो रहता है दैट इज कॉल्ड पेनाल्टीमेट शेल, एंड जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS N-1D, दैट मींस जो पेनाल्टीमेट है उसी के ऊपर सब कुछ फोकस है. ओके, जैसे कि 3D 4D 5D 6D, ऑल द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, वो नीचे उन लोगों का दिया हुआ है. फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना क्यों जरूरी है, कॉमन कुछ जैसे कि स्कैंडियम टू जिंक, ये जानना जरूरी है. देन जानना जरूरी है डिफरेंट उसी के अंदर ही सब एक्चुअली आता है, उससे ज्यादा कुछ हार्ड हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, एक्चुअली इट्स वेरी इजी. ओके, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा था, NS 1 to 2, N-1D 1 to 10. ओके, अभी क्या है, एक्सेप्ट पैलाडियम, पैलाडियम में क्या एक्सेप्शन है, पैलाडियम में क्या है, 4D10 5s 0, 5s में कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है. N-1 stands for the inner d orbital, inner d मतलब अगर 4s है तो 3D, 5s है तो 4D, ऐसा करके इनर वाला जो डी है, नॉट द आउटर वाला. ओके, मतलब उसके बाद जो है वो वाला नहीं है. which may have 1 to 10 electrons and the outermost NS orbital may have 1 or 2 electrons. Okay, ये तो देख के ही पता चल रहा है, इसको उतना जरूरी नहीं है. However, this generalization has several exception. Okay, because क्योंकि जो exception हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके, that is of क्रोमियम एंड कॉपर, है ना. क्रोमियम में क्या होता है, मैं पूरा इनिशियल नहीं लिख रही हूँ, मैं खाली एंड का बोल रही हूँ. क्रोमियम में क्या होता है, क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसीलिए क्रोमियम का क्या होना चाहिए था, एक्चुअली 4s2 3d4, लेकिन क्या होता है, ड्यू टू हाफ फील्ड, टू अटेन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, 4s1 3d5, 4s1 3d5, और इसमें क्या होता है, टू हैव द फुलफिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी 4s1 3d10, इसके पहले है आर्गन का होता है ना. तो वही है, तो इसी के लिए बोला गया है कि वेरी डिफरेंस बिटवीन N-1D and NS orbitals. Furthermore, half and completely filled sets of orbitals are relatively more stable. A consequence of this factor is reflected in the electronic configuration of chromium and copper. जो मैंने तो बोला था chromium and copper, यही है consequence. Okay, in the 3D series. For example, consider the case of chromium which has 3D5 4s1 configuration instead of 3d4 4s2. Okay, the energy gap between the two sets 3d and 4s of orbital is small enough to prevent electron entering the 3d orbitals. Similarly, in case of copper also, the configuration is 3d10 4s1 and not 3d9 4s1, जो मैंने लिखा ऊपर. ठीक है, यह है exception. The ground state electronic configuration of few इधर लिखा हुआ है, देखो ये स्कैंडियम टू जिंक, यू ऑल नो तो ना, अब सब लोगों को पता है, क्लास 11 में आप लोग कर चुके इसका नॉर्मल एटम का, आयन का, सब का, है ना. तो इसका 4s और 3d में कैसे कैसे क्या ऑक्यूपेंसी है वही इधर लिखा हुआ है. और देखो व्हाट आर द एक्सेप्शन, क्रोमियम एंड कॉपर, दिस टू आर द एक्सेप्शन.
ये सेकेंड सीरीज का है, इट्रियम टू कैडमियम। देखो वही ऑक्यूपेंसी है ना, ऑक्यूपेंसी में ये जैसे पैलाडियम का जो है एक्सेप्शन वो है, और इसका एक्सेप्शन है, सेकेंड लास्ट का हमेशा वही एक्सेप्शन है 4s1 3d10 उसी का। ओके, सेम फॉर दिस वन ऑल्सो एक्सेप्शन 1 to 5। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे करके सब सीरीज का है, थोड़ा देख लेना, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो वाला इंपॉर्टेंट है 21 to 30। ओके, नेक्स्ट the electronic configuration of outer orbital of zinc, cadmium, mercury and Cn are represented by the general formula n-1 d10 ns2. The orbitals in these elements are completely filled in the ground state as well as they are in common oxidation state, that is metal का +2 state। metal का +2 state इन लोगों का क्या होगा, n-1 d10 and ns0। हम लोगों को पता है कि आउटर मोस्ट जो शेल होता है ऑर्बिटल होता है उसी से इलेक्ट्रॉन एक्सपेल आउट होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो 0 हो गया। अभी द d orbital of the transition element protrude to the periphery of an atom more than the other orbital, है ना, क्योंकि इसका जो पेनिट्रेशन पावर है बहुत कम है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है s का, पेनिट्रेशन मतलब टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, है ना, देन आता है p, देन d, देन f, इसीलिए d पेरिफेरी में रह जाता है compared to S and P. Hence, they are more influenced by the surroundings as well as affect the atoms or molecules surrounding them. In some respects, ion of a given of DN configuration 1 to 9 have similar magnetic and electronic properties with partly filled d orbitals. These elements exhibit certain characteristics properties such as display of a variety of oxidation states, formation of colored ions and entering into complex formation with a variety of ligands. Okay, so due to this partial fulfillment of the d orbital, ये transition element का क्या क्या special nature है, एक तो vast oxidation state है, दूसरा it can form complex with the ligands। okay, then क्या है, इसका catalytic activity है, then it can form the colored compound। why? due to the dd transition। अगर इलेक्ट्रॉन d इनकम्प्लीट है और वो जो d का जो हम लोगों को पता है d स्प्लिटिंग होता है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फिल थ्योरी, ये तो पूरा d ब्लॉक मतलब ये तो पूरा हो ही गया ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका सब, तो उधर जो क्रिस्टल फील्ड है उधर में तो जंप होगा, उसी के लिए ये है। ठीक है, so next the transition metal and the catalytic properties से वही लिखा है इधर, the transition metals and their compounds also exhibit catalytic property and paramagnetic behavior। all these characteristics have been discussed in detail in later in this unit। okay, there are greater similarities in the property of transition element of the horizontal in the row contrast to the non transition element। तो it is so obvious ना, इन लोगों का इलेक्ट्रॉन का जो पैटर्न है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो वही हुआ। तो नेक्स्ट क्या है, however some group similarities also exist। we shall first study the general characteristics and their trends in the horizontal row, particularly 3d row, and then consider the same group similarities। okay, now there is a question, on what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? बिकॉज कैंडियम का जो डी है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन जिंक का जो डी है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। दैट्स व्हाई देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड 3d orbitals in case of scandium atom in its ground state 3d1 it is regarded as transition element। okay, on the other hand zinc atom has completely filled d orbitals 3d10 in its ground state as well as in the oxidized state। okay, hence it is not regarded as transition element। okay, next now physical properties, move to the क्या क्या है, कैसे रहता है ये लोग, है ना, क्या मतलब एक्चुअली आप लोगों का तो सिलेबस में अभी सॉलिड स्टेट नहीं है, सॉलिड स्टेट होता तो ये जो टर्म है ना HCP BCC देन CCP cubic close packing, body centered close packing, then hexagonal close packing, ये सारे टर्म्स है, ये सॉलिड में मोस्टली मेटल्स
कैसे इसके लैटिस फॉर्म होता है, लैटिस में कैसे कौन रहता है, उस हिसाब से एक एक अरेंजमेंट का एक एक नाम होता है, ठीक है। तो मैं जैसे बोलती हूँ कि ये लैटिस जो होता है ना, मतलब मोस्टली होता है क्यूब, हर यूनिट होता है दैट इज यूनिट सेल। जैसे बॉडी में सेल होता है बेसिक यूनिट, एक मिनट मैं साउंड चेक कर लूं। ओके, जैसे बॉडी में सेल होता है यूनिट, यूनिट होता है सेल, सेल रिपीट करके होता है, कंस्ट्रक्ट करता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से मिला के सब बॉडी होता है। सेम इन सॉलिड स्टेट क्या होता है, एक यूनिट सेल होता है, उसी को रिपीट करके वो पूरा सॉलिड फॉर्म होता है। अभी मैं क्या बोलती हूँ, आप एक अगर स्क्वायर रूम है आपका, कोई विंडो नहीं है, डोर नहीं है, नथिंग, ओके, देन वो जो स्क्वायर रूम हुआ आपका पूरा क्लोज पैक, उसी को एक यूनिट सोच लो। अभी उसी के हर कॉर्नर में एक एटम है, दैट इज होता है एकदम प्रिमिटिव यूनिट सेल। ऐसे करते करते एक पूरा 8 कॉर्नर्स होता है एक स्क्वायर रूम का, क्यूब जो होता है 8 कॉर्नर्स, तो उसके बीच में मतलब उसके बल्क में अगर एक एटम है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड। हर वॉल में के सेंटर में अगर है, 6 वॉल्स आर देयर, मतलब फ्लोर और सीलिंग लेके, ओके, 6 फेस। अभी इस फेस के सेंटर में अगर है, दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड। और बहुत सारा पैटर्न होता है, ठीक है। तो वो होता है एक सॉलिड का जो वो रिपीटेड यूनिट, तो उस हिसाब से ये सारा देखो। और मेटल का जो फिजिकल टिपिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे डक्टाइल, मेलिएबिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, सॉलिड, लस्ट्रस, मेटालिक साउंड्स, दिस आर वेरी नॉर्मल फॉर दिस डी एंड एफ ब्लॉक। हम लोग तो भी डीप पढ़ रहे हैं। Nearly all the transition elements display typically metallic properties such as high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity, and metallic luster. With the exception of zinc, cadmium, mercury, and manganese, they have one or more typical metallic structures at normal temperature. ये लोग अलग है, ठीक है। तो कौन कौन सा एक्सेप्शन है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, मैंगनीज, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इन लोगों का लैटिस स्ट्रक्चर इधर ये दिया हुआ है। आप जो सारे नोन टू यू उसका स्ट्रक्चर आप लोग रट्टा मार सकते हो, लेकिन वो आता नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेल्टिंग पॉइंट। क्या देखो, ये है मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ये प्लॉट। अभी देखो हर ग्रुप में क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टेन, ये सारे इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। क्यों? लेकिन ये तो है इनिशियल में ना, पीरियड के इनिशियल में ये लोग है, लेकिन इनका होता है हाई। वाई? देखो, ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शन इन जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी का होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, ओके। देखो ये देखो, ये है सिल्वर, मरकरी, कॉपर, फिर जिंक किधर गया, जिंक का भी कम ही है, ओके। वेरी जनरली वेरी हार्ड, पता ही है ना आप लोग को, आयरन को ले लो, इट्स वेरी हार्ड, है ना। So very hard, have low volatility. Their melting and boiling points are high. Figure 4.1, this one depicts the melting point. Okay, 3D, 4D and 5D series. 3D है, 4D है, 5D series है. Okay, the high melting point of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from N minus D in addition to the Ns electrons in the interatomic metallic bonding. Okay. In any row, the melting points of these metals rise to a maximum at D5 except for anomalous value of manganese and Tc and fall regularly as the atomic number increases. They have high enthalpies of atomization, which is shown in figure 4.2 again. The maxima at about the middle of each series indicate that one unpaired electron per d orbital is particularly, क्या हो रहा है, ये सब में D5 है। D5 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब इनका एक्सचेंज प्रॉपर्टी, एक्सचेंज एनर्जी इज वेरी हाई, इसके लिए इसका एटमाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक इंटरेक्शंस हो रहा है, क्योंकि अनपेयर्ड है ना, तो हमेशा उसका एक इलेक्ट्रिक, एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। In general, greater the number of valence electrons, stronger is the resultant bonding. Since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential of a metal, metals with a very high enthalpy of atomization, that is very high boiling point. Atomization मतलब वो boil करके जब gaseous phase में जा रहा है, ठीक है।
टेंड टू बी नोबल इन देयर रिएक्शन, मतलब वो इनार्ट होता है, जितना उसको गैसियस फेज जाने के लिए जितना बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा मतलब उसका ज्यादा एनर्जी लगता है, उतना इनार्ट होता है। देखो हर जगह में वो 3D वही क्रोमियम टंगस्टन वही सारे हाई है। Another generalization can be drawn from figure 4.2. This is atomization energy. See, this is atomization energy. This is atomic number के base पे है. Okay, trends in enthalpy of atomization of transition elements. Okay. Another generalization that may be drawn from figure 4.2 is that the metals of the second and third series have greater enthalpies of atomization than the corresponding elements of the first series. Okay. This is an important factor in accounting for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compound of the heavy transition elements. Okay. Metal में अभी bond हो रहा है उसी के लिए. अभी atomic size, ionic size of the transition element उसका क्या vary है. Okay. In general, ion of the same charge in a given series show progressive decrease in radius with increasing atomic number. कब हो रहा है? Ion of the same charge in a given series. For example, 3D series. 3D series में same सबका +2 charge है, तो क्या होगा? वो डिक्रीज होता जाएगा, है ना. अभी तो हम लोगों को पता ही है कि अलोंग द पीरियड साइज तो डिक्रीज ही होता है ना. ओके, दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन्स एंटर अ डी ऑर्बिटल ईच टाइम. एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली जो होता है कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में आ रहा है. अभी प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज भर रहा है एक ही जगह में, उसी का इफेक्ट है. This is because the new electron enters the d orbital each time the nuclear charge increases by unity. Okay. It may be recalled that the shielding effect of a d electron is not that effective. Hence, the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases and the ionic radius decreases. Actually, this is a lanthanide contraction, है ना. क्या होता है? पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो होता है S, देन P, देन D, देन F. ओके. अभी शील्डिंग इफेक्ट जो होता है S, P, D, F, तो D का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम है, उस हिसाब से ये बोला जा रहा है. ठीक है. The same trend is observed in the atomic radii of the given series. आयन में तो होता है लेकिन atomic radii में भी यही होता है. ठीक है. However, the variation within a series is quite small. An interesting point emerges when atomic size of one series are compared with those of the corresponding element in the other series. The curves क्या होता है, जब ऐसे जाओगे तो एक जगह में आके आप लोग देखोगे कि साइज का कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, सेम हो रहा है. ओके, मतलब दैट इज एक्चुअली लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. साइज नीचे बढ़ना चाहिए ना, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज शुड बी इंक्रीज, लेकिन नॉट इन दिस केस. इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. द कर्व्स इन फिगर 4.3 शो, नेक्स्ट पेज में है ये, दिस इज फिगर फॉर ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट. देखो डिक्रीज होके फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है ना, वही बोल रहा है. An increase from the first 3D to the second 4D series of the element, but the radii of the third 5D series are virtually the same as those of the corresponding member of the second series. मतलब ये तीन तो तीन different series है ना, लेकिन देखो ये है 3D, इससे थोड़ा बड़ा 4D है ना. This is 3D, 4D and this is 5D. Okay, so 3D देखो ये है, अभी उससे थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है 4D में, लेकिन 5D और 4D देखो एकदम क्लोज. दिस टू आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. ओके, सो दिस फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल. मतलब 3D के बाद अभी 4f आ गया है, जिसका क्या हो रहा है, जिसका जो शील्डिंग इफेक्ट है और भी कम है. इसीलिए न्यूक्लियर का वैलेंस शेल के ऊपर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्या हो रहा है, साइज और छोटा हो रहा है. ओके, must be filled before the 5D series of the element begins. The filling of 4f before 5D orbital result in a regular decrease in atomic radii called lanthanide contraction. Lanthanide contraction. Okay, so which essentially compensate for the expected
इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कंपेंसेट कर रहा है, मतलब नहीं हो रहा है. ओके, द नेट रिजल्ट ऑफ द लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज द सेकंड एंड द थर्ड डी सीरीज. ओके, एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई, मतलब 4D और 5D. ओके, जैसे कि जर्कोनियम एंड हैफनियम same and have very similar physical and chemical properties, much more than that expected on the basis of usual family relationship. Okay, जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं है इसमें. Next, the factor responsible for the lanthanide contraction is somewhat similar to that observed in an ordinary transition series and is attributed to the similar cause, that is the imperfect shielding of one electron by another in same set of d orbitals. Okay. However, the shielding of one 4f electron by another is less than that of one d electron by another. And as the nuclear charge increases along the series, there is fairly regular decrease in the size of entire 4f orbitals. It's obvious ना, इन लोगों का shielding effect कम है, इन लोगों का penetration power कम है, मतलब न्यूक्लियस इनका, इनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, है ना, कंट्रोल ज्यादा होगा एक्चुअली. ओके, द डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस coupled with increase in atomic mass result in a general increase in the density. Definitely, अगर आपका mass increase हो रहा है लेकिन atomic radius decrease हो रहा है, मतलब size decrease हो रहा है, मतलब volume decrease हो रहा है, मतलब density will increase. It is so obvious, है ना. Thus from titanium, मतलब atomic number 22 to 29, the significant increase in density will be noted. अभी ये क्यों हो रहा है, अभी आप लोगों को क्लियर है ये. ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. देखो ये सब दिया हुआ है क्या, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन तक ये लोग निकाल रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कॉपर +1, कॉपर +2, कॉपर +3. ओके, मेटालिक एंड आयनिक रेडियाई इन पिकोमीटर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब +2 नॉर्मल मेटल से +2 और क्या है मेटल +2 से +3. ओके, उसका जो हो रहा है ये देखो ना देखो चलेगा क्योंकि इसका डेटा दिया रहेगा. You have to answer. Okay, why do the transition element exhibit higher enthalpies of atomization? Due to the large number of unpaired electrons. मैं बोल रही थी ना, large number of unpaired electrons है, their atoms, they have stronger interatomic interaction and hence stronger bonding between atoms, resulting in higher enthalpy of atomization. Okay, next. अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी तो आप लोगों को पता ही है, अगर ये फुल फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तब जाके आप लोग इलेक्ट्रॉन इधर से निकाल रहे हो, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यू आर डिस्टर्बिंग. इन दैट केस क्या होगा, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी हायर. आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब जब भी कोई एलिमेंट का एक एटम इन गैसियस स्टेट, आइसोलेटेड कंडीशन, ग्राउंड स्टेट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में है, एट दैट कंडीशन इसका आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कट करके इनफाइनाइट डिस्टेंस में एक्सपेल आउट करने के लिए मिनिमम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दिस इज एंडोथर्मिक, रिक्वायर्ड होता है, that is called ionization potential. Okay, that is called ionization potential. Fine. So, and enthalpy also, there is increase in ionization enthalpy along each series of the transition elements from left to right due to an increase in nuclear charge in normal जो periodic table का होता है उस हिसाब से बोल रहा है. लेफ्ट टू राइट हम लोगों का तो ionization potential या ionization enthalpy increase ही होता है ना. Filling of the inner d orbitals, वो टेबल 4.2 में जो दिया हुआ है, ये फर्स्ट जो तीन, मतलब वही जो मैं बोल रही थी, कॉपर +1, कॉपर +2, कॉपर +3 तीनों का दिया हुआ है उस हिसाब से. ओके, these values show that the successive enthalpies of these elements do not increase as steeply as in the case of non transition elements. मतलब देखो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, स्टीपली नहीं हो रहा है like other non-transition element. Okay, the variation in ionization enthalpy along a series of transition element is much less in comparison to the variation along a period of non-transition element. The first ionization enthalpy in general increases. Okay,
but the magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpy for the successive element is much higher along a series. देखो ये है first वाला, okay, ionization enthalpy, this one.
ओके, थैंक यू स्पर्श जैन। कब से है ये? हम लोग, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, मैं पढ़ाने में इतना बिजी थी। डिक्रीज होता जाएगा, है ना? अभी तो हम लोग को पता ही। अच्छा, बहुत देर तक ही साउंड नहीं था। थैंक यू। हेलो मैम, GGPS पाबरा। ओके, आप लोगों का जो नेमिंग है इतना कंफ्यूजिंग होता है ना। 5 to 7 minutes, यस। आई एम। आप लोगों का जो नेमिंग है इतना। यस, GGPS पाबरा, टेल मी। थैंक यू स्पर्श, once again. Okay, so एक बार फिर से मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बोल दूं। हाँ मैम, बोलो बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में फिर से मैं एक बार बोल दूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, जब तक 4s है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग 3D में एंट्री करते हैं, 3D का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सपेल आउट करना मोर डिफिकल्ट है। इधर इट इज हाफ फील्ड, फुल फील्ड, एक्सचेंज एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, बहुत सारे फैक्टर्स सॉरी देयर। सो मैं बोलती हूँ कि हमेशा जो फर्स्ट 30 है, 21 to 30 जो 3D सीरीज है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमेशा अपने हाथ से लिखो, और उसका +1 +2 +3 स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वो देखो, डिफरेंट होगा। और उस हिसाब से देखो कि इसका जो एंथैल्पी वैल्यूज है कैसे चेंज हो रहा है। जब तक आप ये नहीं लिखोगे आप नहीं कर पाओगे। नथिंग मैम, ओके नथिंग, ठीक है। ओके, सो क्या हो रहा है, ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चक्कर है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही आप लोगों को चेक करना होगा। ओके, सो next is oxidation state. What I am telling ki oxidation state is very important for transition and inner transition element, because they can exhibit variety of oxidation state. For that it can exhibit the catalytic property also, है ना? So let's start. देखो, first 30 we are concerned about the 3D series mostly. क्या क्या है इसका? देखो, स्कैंडियम का होता है +3, टाइटेनियम का देखो वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अभी जिसका जितना प्लस स्टेबल है ना, वो देखो इधर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि ये है +4, ये +5, ये +3 +6 +2 +7 +2 +3 +2 +3 +2, copper +2, zinc +2. These all are the most stable one. Okay, and common one. देखो, the most common ones are in bold types. These all are most common. Okay, next. The elements which give the greater number of oxidation state occur in or near the middle of the series, that is manganese. For example, exhibits all the oxidation state from +2 to +7. Manganese का क्या है? फिर से मैं लिख रही हूँ, है ना? So it can lose all the 7 electrons. That's why +2 से स्टार्ट होके +7 तक हो रहा है, ठीक है? +2 से स्टार्ट होके +7 तक हो रहा है। The lesser number of the oxidation state at the extreme end stems from either too few electrons to lose or share, है ना? स्कैंडियम टाइटेनियम है ही क्या इन लोगों के पास, बेचारे है ये लोग, है ना? और too many d electrons, hence fewer orbitals available in which to share electrons with other for higher valency like copper, zinc. Okay, thus early in the series scandium is virtually unknown and titanium is more stable than titanium 3 or titanium 2. Okay, अपने पेन एंड पेपर लेके सबका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम टू जिंक लिख लो। मैम कैन आई लीव द क्लास? डेफिनेटली। कौन तुमको पकड़ के रखा है भाई? Good, good humor. Sense of humor is very good. Thank you. I appreciate all the things. Okay.
At the other end, only oxidation state of zinc is +2. No d electrons are involved. जिसमें जिंक में कोई d इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है. 4s2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया, अभी ये 3d हो गया. ठीक है. The maximum oxidation states of reasonable stability correspond in value to the sum of the s and d electrons up to manganese. देखो, followed by a rather abrupt decrease in the stability of the higher oxidation state, so that the typical species to follow are this and this. मतलब ये सारे इन लोगों का कॉमन है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके. स्पर्श जैन, मैम व्हाई Fe don't lose 8 electrons then? Fe नहीं लूज करता है. ठीक है. एक्चुअली मैंगनीज वही, दिस इज अ ट्रेंड. ओके, मतलब ये सारे जो है प्रैक्टिकली देखा गया है. देखो क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑकर इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज. तो एकदम मिडिल में क्या है, मैंगनीज है ना. तो मैंगनीज कैन एग्जिबिट सच लॉन्ग. आयरन नहीं कर पाता है, शायद आयरन का साइज छोटा है मैंगनीज से और भी, है ना. तो इसलिए शायद वो इतना सारा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता है जैसे मैंगनीज कर पाता है. उस हिसाब से okay. So the variability of the oxidation state, a characteristic of the transition element, arises out of incomplete filling of d orbital in a such a way that their oxidation states differ from each other by unity. जैसे वेनाडियम में मतलब क्या हो रहा है, देखो 2 3 4 5 बहुत क्लोज. दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नॉर्मली डिफर बाय ए यूनिट ऑफ 2. ओके. सो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब बोल रहा है कि नॉन ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, 2 तक ठीक है, लेकिन देखो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट में 2 3 4 5 तक भी हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज. ओके. An interesting feature is the variability of oxidation state of the d block element is noticed among the groups group 4 through 10. Although in the p block the lower oxidation states are favored by the heavier members due to the inert pair effect. वो तो एक अलग ही चीज है ना. हर ग्रुप का जो नीचे वाला एकदम द लोएस्ट मेंबर है उसका जो होता है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है. मतलब उसका जो s का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ठीक है. दैट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. उसका एक अलग कहानी होता है, वो पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 में. द ऑपोजिट इज ट्रू इन द ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक. फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप 6 molybdenum 6 and tungsten 6 are found to be more stable than chromium 6. Okay. Thus chromium is the form of dichromate in acidic medium, is a strong oxidizing agent, whereas molybdenum trioxide and tungsten trioxide are not. So this one is very important. This one is very important. Okay. Next, low oxidation states are found when a complex compound has ligand capable of pi acceptor character in addition to the sigma bonding. For example, in nickel tetracarbonyl, iron pentacarbonyl, actually इन सारे में क्या होता है, वो सारे पाई क्लाउड के थ्रू या सिग्मा क्लाउड के थ्रू अट्रैक्टेड रहते हैं. कोई प्रॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है इसमें. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस वन इज वेरी मच इनर्ट. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है. एक्चुअली हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े थे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट 0. वही. नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. दैट इज कैंडियम. है ही क्या उसके पास, बेचारे के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है 4s में, है ना. तो कैसे 3d में 4s to 3d1 तो नहीं करते हैं. नेक्स्ट, ट्रेंड इन द M2 प्लस एंड M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मतलब +2 से प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना. टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ MO
molybdenum and tungsten, then chromium. मॉलिब्डेनम और टंगस्टन एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल जो ग्रुप होता है ना पी ब्लॉक का या सब का, जो एकदम लोअर मेंबर होता है ग्रुप के नीचे वाला, उधर जो एस होता है उससे वो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ते हैं इन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन इसमें वो बात नहीं है, मॉलिब्डेनम या टंगस्टन में वो जो एस होता है इसका इलेक्ट्रॉन कैन लीव, दैट्स व्हाई देखो 6 और 6, जो मॉलिब्डेनम 6 और टंगस्टन 6 इज वेरी स्टेबल, 4s से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन क्रोमियम का 6 उतना स्टेबल नहीं है। क्रोमियम का 6 मतलब क्या होता है, क्रोमियम ये पूरा निकल जाएगा इसका, तो इट विल नॉट अलाउ, लेकिन ये करता है, इसका इसका वो जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है। हाँ वही तो, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है इसमें इसीलिए, लेकिन नॉर्मली पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट रहता है। ओके, नेक्स्ट थर्मोकेमिकल पैरामीटर है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से बोला जाएगा कि आयन इन सोल्यूशन एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ दिस एंड इसको ऐसे प्लॉट किया गया है। द यूनिक बिहेवियर, अभी हम लोग क्या है यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर में जाएंगे। द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग अ पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अकाउंट फॉर इट्स इनेबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। वी नो दैट कॉपर किसी भी एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है ना। Only oxidizing acids, nitric acid at hot concentrated sulfuric acid react with copper. The acids being reduced. The high energy to transform copper to copper 2 plus in aqueous. Solid copper से copper 2 plus aqueous is not balanced by its hydration enthalpy. The general trend towards less negative standard reduction potential value across the series is related to the general increase in the sum of the first and second ionization enthalpies. It is interesting to note that the value of standard reduction potential for Mn, nickel and zinc are more negative than expected from the trend. ट्रेंड में जो होना चाहिए था उससे मोर नेगेटिव है। सो मैं वही बोल रही हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर, सो फॉर दैट पर्पस दिस चैप्टर, ओनली दिस चैप्टर यू हैव टू डू दैट रट्टा। वो रट्टे के लिए आप लोग पेन पेपर लो, एनसीईआरटी को ओपन करो और जितना सारा पॉइंट्स है नोट डाउन करो और इसका एक्सरसाइज करो, फिर हो जाएगा 7 मार्क्स आपके बैग में आराम से। और पिछले वाला एग्जाम कैसे गया, डोंट थिंक अबाउट दैट, ओके। जो हो गया सो हो गया, अभी आगे का जो एग्जाम है उसके लिए सोचो, उसी के ऊपर फोकस करो। Why is chromium 2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing when both have D4 configuration? Why? Chromium 2 plus is reducing as its configuration changes from D4 to D3, the latter having a half-filled T2G level. Okay. On the other hand, the change from Mn3 plus to Mn2 plus result in a half-filled D5 configuration, which has extra stability. अच्छा, कोई भी रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है, इज आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम एज हाइड्रोजन एंथैल्पी? नो, हाइड्रोजन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी, किसके बारे में बोल रहे हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी ना, नो नो नो, डिफरेंट डिफरेंट। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब वाटर के साथ मतलब कितना हाइड्रेटेड हो पा रहा है एक मॉलिक्यूल, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, सो जो मैं बोल रही थी कि यही कि इन लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग। सो इधर जो कॉपर क्रोमियम है वो है रिड्यूसिंग, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। सो क्रोमियम 2 plus reducing as its configuration changes from D4 to D3. Why? When it will form complex, then the ligand आने से क्या होगा, DD splitting होगा, तो फिर D3 होने से क्या होगा, इसका जो हाफ फिल्ड हो जाएगा, मतलब D3 का जो है वो लोअर है, अगर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कुछ भी स्प्लिटिंग हो तो हाफ फिल्ड T2G लेवल।
ओके वही होगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, हमेशा वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, ठीक है। लेकिन Mn3+ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद को दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, मतलब इट विल टेक इलेक्ट्रॉन। ओके, इसलिए क्या हो रहा है, देखो Mn3+ मतलब है ना, तो ये भी तो D4 हो जाएगा Mn3+ से, लेकिन इसका जो हाफ फील्ड है ये डिस्टर्ब होगा, दोनों का ही हाफ फील्ड है, लेकिन इसका हाफ फील्ड डिस्टर्बेंस नहीं अलाउड, उसका हाफ फील्ड डिस्टर्बेंस अलाउड, बिकॉज उसका जो है स्प्लिटिंग होके वो T2G लेवल का हाफ फील्ड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्मोकेमिकल डेटा है इधर, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ filled D शेल इन Mn2+ एंड कंप्लीटली filled D10 कॉन्फ़िगरेशन इन Zinc2+ रिलेटेड, वैसे करके सब कुछ दिया हुआ है। इधर हाइड्रेशन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पूरा पूरा दिया हुआ है टाइटेनियम टू जिंक। ओके, स्कैंडियम नहीं है इसमें, स्कैंडियम नहीं है इसमें, 22 से स्टार्ट हुआ है, एटॉमिक नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, इस हिसाब से ये पूरा दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अभी जो क्या है, फर्स्ट तो वो था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी +2 से +3, अभी examination of these values, again table point 42 shows the varying trend. The low value for scandium reflects the stability of scandium 3+, which has a noble gas configuration. The highest value of zinc is due to the removal, the highest value of zinc is due to the removal of an electron from the stable D10 configuration. The comparatively high value of manganese show that the Mn2+, that is D5, is particularly stable, whereas comparatively low value for iron shows that the extra stability of Fe3+, that is D5. Okay, the comparatively low value for vanadium is related to the stability of V2+, half filled T2G level, that is our coordination compound. Okay, now trend in stability of the higher oxidation state. अभी higher oxidation में कौन क्या stable है भाई, ठीक है, कितना कितना स्टेबिलिटी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी, +6, +5, +4, +3, +2, +1। ओके, अभी टाइटेनियम का हाउ मेनी, वनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबर, निकेल, कॉपर, जिंक, सबका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, इन फॉर्म्स ऑफ हैलाइड ये दिया हुआ है, ठीक है। The highest oxidation number are achieved in TiX4, tetrahalides, vanadium pentafluoride and chromium hexafluoride. The +7 state for manganese is not represented in the simple halides, but MnO3F, it's in a compound, not with single fluorine, also with oxygen. Okay, is known, and beyond Mn no metal has a trihalide except FeX3 and COF3. The ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to either higher lattice energy, as in the case of COF3, or higher bond enthalpy in terms for the higher covalent compounds vanadium pentafluoride or chromium hexafluoride. Although vanadium pentafluoride, vanadium +5 state is represented only by vanadium pentafluoride, the other halides, however, undergo hydrolysis to give oxohalides. Okay. Another feature of fluoride is that their instability in the low oxidation state. Fluoride होने से उसका stability घट रहा है. Okay. Next, this one is very important about the stability of the copper +1 and copper 2+ in aqueous solution. क्या होता है, ठीक है? And the same applies to the copper X, मतलब copper halide. On the other hand, all copper 2 halides are known except the iodide. In this case, copper 2+ oxidizes I- to iodine. कॉपर +2 का स्टेबल आयोडाइड नहीं होता है, Q+ ऑक्साइड होता है, Cu2I2. Why? This is the reason. This also is very important. बैलेंस इक्वेशन इसका
कर लेना, okay? However, many copper 1 compounds are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation reaction. This one is very important in aqueous state, important, okay? The stability of copper 2 plus aqueous, rather copper 1, is due to the much more negative hydration enthalpy. Negative मतलब कोई भी चीज negative मतलब exothermic, जितना exothermic उतना वो feasible, okay? Which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper. Okay, this one is very important. The ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state is demonstrated in the oxides. For fluoride का भी oxide, the highest oxidation number in the oxides coincide with the group number and attain in scandium oxide, okay, to Mn2O7. Fine. Beyond group 7, no higher oxides of iron above Fe2,3 are known, although ferrets are formed in alkali media, but they readily decomposes to Fe2O3 and oxygen. Beside the oxides, oxocation stabilize 5 as VO2 plus, V and 4 as VO2 plus, and titanium as TiO2 plus. Okay, these are vanadium and titanium. The ability of oxygen to stabilize this high oxidation state exceeds that of fluorine. Thus, the highest manganese fluoride is MnF4, whereas the highest oxides is Mn2O7. The ability of oxygen to form multiple bonds to metal, जो fluorine नहीं कर सकता, वो multiple bond to form नहीं कर सकता है ना, its superiority. In the covalent oxide Mn2O7, each Mn is tetrahedrally surrounded by O, including as MnO, manganese oxygen manganese breeze. ये breach करके रहता है, देखो. The tetrahedral MO4 N minus ions are also known for vanadium, chromium, manganese, manganese for 5, manganese for 6, and manganese for 7. Okay. This one is very interesting कि ऑक्सीडाइजिंग पावर के हिसाब से ये ट्रेंड को जस्टिफाई करो. अभी क्या है, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस. इधर रिड्यूस होके जिस स्पीशीज में जा रहा है उसका एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी है, इसीलिए ये ऐसे हो रहा है. ठीक है. केमिकल रिएक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. एक मिनट, मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ. हाँ, ओके, सो वेलकम बैक. केमिकल रिएक्टिविटी के हिसाब से क्या हो रहा है, ट्रांजिशन मेटल्स वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी. मेनी ऑफ देम आर सफिशिएंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू डिसॉल्व इन मिनरल एसिड्स, although few are noble, that is they are unaffected by the single acid. Okay, the metal of the first series with the exception of copper are relatively more reactive and oxidized by 1 molar H plus. Though the actual rate at which this metal react with oxidizing agent like hydrogen ion H plus is sometimes slow. For example, titanium and vanadium in practice are passive to dilute non-oxidizing acid at room temperature. The standard reduction potential E0 values for this indicate a decreasing tendency to form divalent cation across the series. This general trend towards the less negative E standard values, okay, is related to the increase in the sum of the first and second ionization enthalpy. It is interesting to note that the E0 value for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from the general trend.
whereas the stability of half-filled D subshell in manganese 2 plus and completely filled D subshell D10 in zinc are related to their E standard values. For nickel, E standard value is related to the highest negative enthalpy of hydration. Okay. An examination of the E standard value of the redox couple, okay, shows that manganese 3 plus and cobalt 3 plus ions are strongest oxidizing agent in aqueous solution. Cobalt 3 plus and manganese 3 plus, strongest oxidizing agent in aqueous solution. The ions titanium 2 plus, vanadium 2 plus and chromium 2 plus are strong reducing agent and will liberate hydrogen from a dilute acid. Okay. So titanium 2 plus, vanadium 2 plus, titanium, vanadium and chromium 2 plus are strong reducing agent and will liberate hydrogen from dilute acid. Okay. Next, magnetic properties. We know that about that magnetic properties, that is diamagnetic, paramagnetic, maximum number of unpaired electron will make it paramagnetic. We have the formula root over n into n plus 2 Bohr magneton, where n is the unpaired electron, है ना, और d में अगर सब कुछ paired है तो know that such magnetic property. Okay. When a magnetic field is applied to the substance, mainly two types of magnetic behavior are observed. Okay. What are those? Diamagnetic and paramagnetism. Diamagnetic substances are repelled by the applied field, while the paramagnetic substances are attracted. Substances which are attracted very strongly are said to be ferromagnetic. In fact, ferromagnetism is an extreme form of paramagnetism. Many of the transition metals are paramagnetic. Okay, paramagnetism arises from the presence of unpaired electron, and this is the formula. What I have said, type magnetic moment is equal to root over n into n plus 2, where n is unpaired electron and the unit is Bohr magneton. Okay, हम लोग coordination compound में already we have learned about this. Okay, so उतना ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ, खाली for the compound of first series of transition metal, the contribution of the orbital angular momentum is effectively quenched and hence is of no significance. For this, the magnetic moment is determined by the number of unpaired electron and is calculated by using this spin only formula. So orbital angular का कुछ नहीं होता है, that's why only spin, that's why the unpaired electron का concept is here. Okay. The magnetic moment increases with the increasing number of unpaired electron. That is obvious. Thus, the observed magnetic moment gives a useful indication about the number of unpaired electron present in the atom, molecule, or ion, or complex. है ना? The magnetic moment calculated from the spin only formula and those derived experimentally for some ion of the first row transition elements are given. Okay. The experimental data इधर है ऐसे कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना. ओके, ये तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़े थे उसी के ऊपर है. ठीक है. नेक्स्ट, formation of colored ions, also it's from coordination compound, DD transition, D splitting then transition. When an electron from a lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbital, the energy of excitation corresponds to the frequency of light absorbed. अभी वो किधर जाता है? Visible region में. The frequency generally lies in the visible region. Okay, the color observed correspond to the complementary color of the light absorbed. Definitely ना, जो कलर वो जो लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा वेवलेंथ उसका complementary it will release, है ना. The color absorbed or complementary color of the light absorbed. The frequency of the light absorbed is determined by the nature of the ligand. In aqueous solution where water molecules are the ligands, okay, the colors of the ions observed are listed in the table. ये देख लेना थोड़ा. D block का जनरली जो होता है कॉपर का ब्लू होता है, देन आयरन का ग्रीन होता है, आयरन +2 ग्रीन, आयरन +3. हम लोग जो क्लास 10 में ICSE स्टूडेंट्स आर लर्निंग अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन दैट चैप्टर दे कैन नो अबाउट द कलर ऑफ डिफरेंट आयंस. ओके, सो हियर इट इज. और अगर कोई डी का इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो दैट विल बी कलरलेस लाइक स्कैंडियम एंड टाइटेनियम. ओके, लेकिन टाइटेनियम 3+ के पास इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई पर्पल. वनाडियम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट कलर. ओके,
देखो, आयरन 3 येलो, आयरन 2 ग्रीन, है ना। आयरन 3 का हाइड्रोक्साइड होता है ब्राउन। ओके, अच्छा, कोबाल्ट 3+ दोनों ब्लू पिंक होता है, निकल 2+ ग्रीन होता है, कॉपर ब्लू होता है, जिंक तो कलरलेस होता है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज इन विच द मेटल आयन बाइंड। ये तो कॉम्प्लेक्स का जो पूरा है, आप तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर से ही आप लोगों को पता है कि मेटल हैज दिस ट्रांजिशन मेटल हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। वन जो वो फुलफिल करता है चार्ज स्पीशीज से, दूसरा जो फुलफिल करता है लिगैंड से, जो क्या करता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते करते हैं, है ना। सो मेटल लिगैंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसमें से हम लोग उस मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसका आईयूपैक नेम, सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, उसका आइसोमेरिज्म। सो वही है, ये तो उधर से ही पढ़ लेना। नेक्स्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity. This activity is ascribed due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes. Vanadium oxide in contact process, finely divided iron in Haber process, and nickel in catalytic hydrogenation are some of the examples. Catalysts at a solid surface involve the formation of bonds between the reactant molecule and the atom of the surface of the catalyst. First row transition metals utilize 3d and 4s electrons for bonding. Okay, this one is now important. This has the effect of increasing the concentration of the reactant at the catalyst surface and also weakening of the bonds in the reacting molecules. The activation energy is lowering also because the transition metal ions can change their oxidation state. They become more effective as catalysts. For example, iron 3 catalyst, the reaction between iodide and persulfate ion. So this one is very important. An explanation of this catalytic action can be given as, देखो क्या हो रहा है, आयरन क्या कर रहा है, +3 है, I- है, ओके, I- को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है ना। देन क्या कर रहा है, ये जो ऑक्सीडेशन फॉर्म है, मतलब ये जो रिड्यूस हो रहा है, इसको तो ऑक्सीडाइज करके आयोडीन को रिलीज कर दिया। देन क्या किया इसने, H2OH2- के साथ, मतलब कभी ये आयोडीन के साथ, कभी इट विल रिएक्ट विद दिस I-। नेक्स्ट, दिस जो ये जो रिड्यूस फॉर्म हुआ, अगेन इट विल रिएक्ट विद दिस SO3 SO2 थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। तो फिर क्या हो रहा है, एट द एंड इट रिमेन सेम। कैटलिस्ट का तो वही फंक्शन है ना, कैटलिस्ट मतलब जो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिमेन सेम, तो ये रिमेन सेम हो रहा है ना। हम लोग Fe3+ इंट्रोड्यूस करें, वी आर गेटिंग Fe3+, Fe3+ एक बार Fe2+ हो रहा है, फिर से रिएक्ट करके Fe2+ से Fe3+ हो रहा है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट रिमेन सेम, नो इशू। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Next, formation of interstitial compounds. What is that? Interstitial compounds are those which are formed when small atoms like hydrogen, carbon and nitrogen are trapped inside the crystal lattice. They are usually non-stoichiometric and are neither typically ionic or covalent. For example, titanium carbide, Mn4n, ferric hydride, vanadium hydride 0.56. See, it's not in the whole number. Titanium hydride 1.7, etc. The formulas quoted do not, of course, corresponding to any normal oxidation state of the metal because of the nature of their composition. These compounds are referred to as interstitial compounds. The principal physical and chemical characteristics of these compounds are as follows. They have high melting points, higher than those of pure metals. Okay. Next, they are very hard. Some borides approach diamond in hardness. Okay. They retain metallic conductivity. Okay. They are chemically inert. Very good. So these are interstitial compound का जो nature है. Next, alloy formation. My sounds are okay ना? DJ
ध्यानी क्या पोली पोली वॉट एवर, आप लोगों का जो नाम होता है ना वो प्रोनाउंस करते करते मतलब कोई उसका मतलब ये पूरा टंग ट्विस्टर होता है आप लोगों का जो नाम है, ठीक है। ओके नेक्स्ट एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय अगेन हम लोग मेटल नॉन मेटल तो क्लास बचपन में क्लास 10 में कर चुके। एलॉय इज अ सॉलिड सॉल्यूशन है ना, मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए या मेटल का लॉन्जिविटी इंक्रीज करने के लिए या फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल के साथ नॉन मेटल वी यूजुअली ऐड। ओके सो दैट्स व्हाई ये जो एलॉय होता है वो क्या होता है, वो सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन, कभी मेटल के साथ मेटल कभी मेटल के साथ नॉन मेटल भी ऐड किया जा सकता है इस एलॉय के लिए। ओके इट डिपेंड्स अपॉन द पर्पस। Alloy is a blend of metal prepared by mixing the component. Alloys may be homogeneous solid solution in which the atoms of one metal are distributed randomly among the atom of the other. Such alloys are formed by atoms with metallic radii that are within about 15% of each other. Because of similar radii and other characteristics of transition metals, alloys are readily formed by these metals. The alloys so formed are hard and have often high melting points. The best known are ferrous alloys like chromium, vanadium, tungsten, molybdenum and manganese are used for the production of various steel. हम लोग जितना सारा एसएस स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं उसमें कार्बन भी रहता है ना, are used for the production of variety of steel and stainless steel. Alloy of transition metals with non-transition metal such as brass, copper and zinc, bronze, copper and tin, दोनों में कॉमन क्या है कॉपर, एक में है जिंक एक में है टीन, ओके, are also of considerable industrial importance. Fine. Next, oxides and oxides, these are very important. इसका जितना सारा रिएक्शन है ना that is more important. The oxides are generally formed by the reaction of metal with oxygen at high temperature. All the metals except scandium form MO oxides which are ionic. The highest oxidation number in the oxides coincides with the group number. जो ग्रुप नंबर होता है उसी के साथ कोइंसाइड किया गया है, मतलब इट्स कोइंसिडेंटल, ऐसा कि नहीं कि जानबूझ के हुआ है, ठीक है, एंड इज अटेन टू like in scandium oxide to manganese oxide. Beyond group 7, no higher oxides of iron above Fe2O3 are known. Besides the oxides, the oxocation stabilizes as BO2 plus, B4 as BO2 plus, titanium 4 as TiO2 plus, like that. As the oxidation number of a metal increases, ionic character decreases. We know now, according to Fazan's rule, higher the charge of any cation and ion, higher is the covalency. So ionic character decreases. In the case of manganese, Mn2O7 is a covalent green oil. Even CrO3 and V2O5 have low melting points. In this higher oxides, the acidic character is predominant. Okay. Thus, Mn2O7 gives this one and CrO3 gives this one. This acid is very dangerous. Okay. And this. V2O5 is however amphoteric, though mainly acidic, and it gives VO4 3 minus as well as VO2 plus salts. So this is amphoteric, V2O5 amphoteric. In vanadium, there is gradual change from the basic V2O3 to less basic V2O4 and to amphoteric V2O5. तो acid, base, amphoteric सब है, इसमें सब है, okay? Next, V2O4 dissolves in acids to give VO2 plus salts. Similarly, V2O5 reacts with alkalis as well as acids to give VO4 3 minus and VO4 plus respectively. The well characterized CRO is basic but CR2O3 is amphoteric. So ये आप लोगों को एकदम एक पूरा चार्ट बना लीजिए कौन सा क्या है, एसिड बेसिक एसिड, अभी आपके हाथ में 2 दिन है, ओके? अभी जो है ये सारे रिएक्शन दैट इज Fe Cr2O4 2 प्लस सॉरी 2 माइनस से आप लोगों को CrO4 ये जो है 2 माइनस इधर से इधर जाना है. सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे इक्वेशंस आते हैं. पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री एज एन ऑक्सीडेंट.
of many azo compounds. Dichromates are generally prepared from chromate, which in turn are obtained by the fusion of chromite ore with sodium or potassium carbonate in free access of air. The reaction with sodium carbonate occurs as follows. Okay. The yellow solution of sodium chromate is filtered and acidified with sulfuric acid to grieve the solution from which orange sodium dichromate, potassium dichromate भी orange होता है. We are getting, okay? Next, sodium dichromate is soluble. पहले सोडियम से पोटेशियम में जाएंगे हम लोग. Is more soluble than potassium dichromate. The latter is therefore prepared by treating the solution of sodium dichromate with potassium chloride. Now, orange crystal of potassium dichromate, these all are very important. A potassium dichromate crystallizes out that chromates and dichromates are interconvertible in aqueous solution. Okay, these all are interconvertible. In aqueous solution, depending upon pH of the solution, the oxidation state of chromium in chromate and dichromate is the same. अभी स्ट्रक्चर देखो इन लोगों का. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज क्रोमेट आयन, क्रोमियम विथ 4 सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन चार्ज 2-. दिस इज क्रोमियम ब्रिज, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम ब्रिज है और सबके पास 3-3 ऑक्सीजन. दिस इज डाइक्रोमेट आयन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, the structure of chromate ion and the dichromate are shown below. The chromate ion is tetrahedral, whereas the dichromate ion consists of 2 tetrahedrals sharing one corner. This is a bridge. Okay. Sodium and potassium dichromate are strong oxidizing agent. The sodium salt has a greater solubility in water and extensively used as oxidizing. कोई भी organic chemistry में हम लोग क्या करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 इससे ही तो ऑक्सीडाइज करते हैं, है ना? Inorganic chemistry, देखो बोल दिया इधर भी. ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आल्सो. ओके, आप लोगों का लैब है, आप लोग लैब कर रहे हो चुका शायद एग्जाम, तो आप लोगों का प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, हम लोग तो नया सेशन में लैब के लिए भी वी विल गिव द सेपरेट क्लासेस. ओके, तो उस हिसाब से in acidic solution its oxidizing action can be represented as follows. So ये है वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारा इक्वेशन केमिस्ट्री में तो बहुत कम ही रट्टा मारना पड़ रहा है. एक ही तो चैप्टर और ये चैप्टर के अंदर ये थोड़ा थोड़ा इक्वेशंस. ओके, thus acidified potassium dichromate will oxidize iodide to iodine, sulfide to sulfur, tin 2 to tin 4, यही सब कर रहा है ना. Fe2 plus to Fe3 plus. The full ionic equation may be represented by the adding half equation. मतलब जिसके साथ जो हो रहा है उसके हिसाब से उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके ऐड कर दो. जैसे इधर आयरन का है इसीलिए ये वाला इधर दिखाया हुआ है. आयरन के लिए देखो 6 Fe2 plus से 6 Fe3 plus 6 इलेक्ट्रॉन और डाइक्रोमेट का क्या 6. अच्छा, उस हिसाब से लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई किया है. अदरवाइज Fe2 plus से Fe3 plus तो 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इधर 6 चाहिए इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन. ओके, next potassium permanganate. This is also very important. Potassium permanganate is prepared by fusion of MnO2 with an alkali metallic hydroxide. Then उससे क्या होता है? मैंगनेट होता है. Then मैंगनेट को this produces dark green K2MnO4 which is disproportionate to into a neutral or acidic solution to give permanganate. This is also very important. Okay. Next, fused with alkali manganate ion, then manganate electrolytic reduction permanganate. Okay, so this one is very very important. ये सारे इक्वेशन यही तो है इक्वेशन इस चैप्टर का, और तो कुछ नहीं है. इन द लेबोरेटरी Mn2 प्लस और थायोसल्फेट का जो होता है टाइट्रेशन होता है. ठीक है, तो वही है इक्वेशन. क्या होता है Mn2 प्लस से देखो क्या बोल रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म्स डार्क पर्पल. पोटेशियम परमैंगनेट हो रहा है, उसका कलर जो होता है ना डार्क पर्पल, दूर से देखोगे तो ब्लैक लगेगा, इतना डार्क होता है. विच इज आर आइसोस्ट्रक्चरल विद दोज ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. अगर दोनों क्रिस्टल का स्ट्रक्चर सेम होता है तो उसको बोला जाता है आइसोमॉर्फ. आइसोमॉर्फ. द सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर but when heated it decomposes to this. तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी ईयर ये आता है क्वेश्चन. KMnO4 ऐसे एरो करके छोड़ दिया, फिल इन द ब्लैंक्स. K2MnO4 MnO2 O2. ओके, रट्टा मार लो. नेक्स्ट,
इट हैज टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर देख लो MnO4 का, दो है डबल बॉन्ड और दो है सिंगल बॉन्ड, जो जिस दोनों में चार्ज है -2, और ये है मैंगनेट जो है ग्रीन, एंड दिस इज पर्पल कलर टेट्राहेड्रल, जिसमें देखो तीनों में है डबल बॉन्ड, एक में है सिंगल बॉन्ड विद -1 चार्ज, so this is permanganate. Okay, the manganate and permanganate to physical power considerably interest its intense color and intense diamagnetism along with temperature dependent weak paramagnetism. This can be explained by the use of molecular orbital theory which is beyond the present scope, because ये तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है molecular orbital theory. Next, the manganate and the permanganate ions are tetrahedral. The pi bonding takes place by overlap of p orbitals of oxygen with the d orbital of the manganese, pd, d pi p pi bond. Okay, the green manganate ion is paramagnetic because of one unpaired electron, but the permanganate is diamagnetic due to the absence of unpaired electron. Okay, so एक है diamagnetic, एक है paramagnetic. Okay, अभी acidified, this one is also important. यही तो है ऑक्सालेट, ऑक्सालिक एसिड है, ऑक्सालिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस ऑक्सालेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, वही है। और क्या क्या करता है, द फुल रिएक्शन कैन बी रिटन बाय एडिंग द हाफ इक्वेशन को ऐड करके किया जा सकता है। अच्छा, ये है एसिडिक मीडियम में जो हो रहा है, एसिड सोल्यूशन, we can very well see that the hydrogen ion concentration of the solution play an important part in influencing the reaction हर जगह में, although many reactions can be understood by consideration of redox potential. इस reaction के बारे में बोला गया है। ऐसे करके अभी क्या है, कुछ important reactions है जो कभी क्या कर रहा है कि MnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट एसिड मीडियम में करता है, जैसे कि देखो I- को I2 करके रिलीज कर रहा है, Fe2+ को Fe3 कर रहा है, ऑक्सालेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, H2S से सल्फर को रिलीज कर रहा है, सल्फ्यूरस एसिड को सल्फेट बना रहा है, नाइट्राइट को नाइट्रेट कर रहा है। न्यूट्रल मीडियम में क्या क्या होता है, देखो I- IO3- हो रहा है, थायोसल्फेट जो है सल्फेट हो रहा है, Mn2+ जो है MnO2 हो रहा है, ठीक है। Permanganate titration in presence of hydrochloric acid are unsatisfactory since hydrochloric acid is oxidized to chlorine, इसीलिए नहीं होता है ये, ठीक है। Next, inert transition element. Okay, so give me a moment, I'm coming back. Hello. Okay, so the inner transition elements, that is F block, fine. हर पोजीशन पे पीरियड 6 एंड पीरियड 7 में ग्रुप 3 में हर पोजीशन पे फर्स्ट मेंबर को छोड़ के 14 एलिमेंट्स आर देयर,
Okay, because in लोगों का जो chemical property, physical property all are same. That's why they are placed in a single position. The F block consists of two series lanthanoids, that is 6 period में जो है, and the actinoids जो 7th period में है, 14 elements, 14 elements. Okay, because lanthanum closely resembles the lanthanoids, it is usually included. Lanthanum जो मैंने बोला first member है उस group के उस period में, closely resembles, that's why they put in there. Okay, and the symbol Ln is often used. Similarly, a discussion of the actinoids includes actinium. Besides the 14 elements constituting the series, okay, the lanthanoids resembles one another more closely than do the members of ordinary transition elements in any series. Okay, that's why they are placed, they are put in a single position. Okay, they have only one stable oxidation state, and their chemistry provides an excellent opportunity to examine the effect of small changes in size and nuclear charge along a series of otherwise similar elements. The chemistry of the actinoid is, on the other hand, much more complicated. Why? Because उसके पास अभी क्या है, F है. Apart from S, P, D, now F is there. Okay, the complication arises partly owing to the occurrence of a wide range of oxidation states in these elements, and partly because their radioactivity creates special problem in their study. The two series will be considered separately here. Okay, so समझ में आ गया complication क्यों हो रहा है? ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ, मतलब एफ है तो अभी ऑक्सीडेशन सीरीज में बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए वही पढ़ेंगे हम लोग. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f. okay, अच्छा, atomic size same here. Lanthanide contraction is also observed here. okay, तो ये एक बार पढ़ लेना. is a unique feature in the chemistry of the lanthanoids. It has far-reaching consequence in the chemistry of the third transition series of the element. The decrease in atomic radii derived from the structure of metal is not quite regular as it is regular in M3 plus ions. Okay, this contraction is of course similar to that observed in an ordinary transition series and is attributed to the same cause, the imperfect shielding of one electron by another in the same subshell. However, the shielding of one 4f electron by another is less than one d electron by another with the increase in nuclear charge along the series. अब ऐसे क्या हो रहा है, अभी f इलेक्ट्रॉन आ रहा है, f इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसके साथ साथ हम लोगों का न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा है ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग, so nuclear charge is also increasing. Okay, there is fairly regular decrease in the size. However, the shielding of one 4f electron by another is less than one d electron by another with the increase in nuclear charge along the series. There is fairly regular decrease in the size of the increasing atomic number. Okay. The cumulative effect of the contraction of the lanthanoid series is known as lanthanoid contraction. Okay, causes the radii of the member of the third transition series to be very similar to the corresponding member of the second series. First से second और third में क्या हुआ, size same हो गया. Okay, the almost identical radii for zirconium and hafnium. A consequence of the lanthanoid contraction account for the occurrence together in nature and for the difficulty faced in their separation. Okay, next. In the lanthanoids, lanthanum 2 and this 3 compounds are predominant species. ये दोनों ही compound form करता है, ठीक है. However, occasionally +2 and +4 in solution or in solid compounds are also obtained. Fine. This irregularly arises mainly in the extra stability of empty half-filled or filled F subshell. F में क्या है, 1 to 14 electrons है ना, बहुत vast range है इसका. Okay, so ये सारे है, but it is a strong oxidant, cerium 4, reverting to the common +3 state. The standard reduction potential value of this one is this, plus 1.74, which suggests that it can oxidize as water. Okay, however, the reaction rate is very slow and hence cerium 4 is a good analytical reagent. Then PR, ND, TB and DY are also exhibit +4 state but only in oxides. Okay, so
Losing the 2s electrons and its F7 configuration accounts for the formation of this ion. However, europium is a strong reducing agent, changing to the common plus 3 state. Similarly, ytterbium, which has a 14 configuration, is a reductant. ओके सो ऐसे करके हाफ फिल फुल फिल ऐसे करके कोई है रिडक्टेंट कोई है ऑक्सीडेंट ऐसे करके सबका है ओके samarium is very much like europium exhibiting both +2 and +3 oxidation state. इन लोगों का नॉर्मल जो है लैंथेनम सीरीज का देखो सेरियम प्रेसिडियम नियोडाइमियम प्रोमेथियम सैमरियम यूरोपियम गैडोलियम टाइरियम डिस्पोर्शियम हॉल्मियम इर्बियम थूलियम इटर्बियम एंड ल्यूटेशियम पूरा सबका देखो इधर है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इंपॉर्टेंट है सिंबल इंपॉर्टेंट है रेडियाई तो सॉरी आप लोग कैसे याद रखोगे खाली वो ट्रेंड देखना ट्रेंड देखना ओके नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में उतना कुछ खास नहीं है हार्डनेस ऑल द लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल ट्रांजिशन tarnished rapidly in air hardness increases with increasing atomic number samarium being the steel hard okay इसका melting point भी very high है 1000 to 1200 K samarium melts this okay they have typically metallic structure and good conductor of heat and electricity density is higher trivalent lanthanides okay इसका इतना कुछ important नहीं है हाँ ये एक बार देख लेना burning oxygen में क्या होता है लैंथेनॉइड्स का जनरल रिएक्शन विद एसिड हाइड्रोजन रिलीज करता है हैलोजन के ट्राइवैलेंट होता है वाटर में ट्राई हाइड्रोक्साइड पूरा 3 है इसका वैलेंसी जनरल वैलेंसी देन कार्बन के साथ देन नाइट्रोजन के साथ सल्फर के साथ ऑक्सीजन के साथ ओके ये देख लेना ये इंपॉर्टेंट है देन व्हाट इज मिश मेटल ये व्हाट इज दिस ये क्या होता है देखो द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लैंथेनॉइड्स इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ alloy steel for the plates and pipes. A well-known alloy is mish metal, which consists of a lanthanide metal 95% and iron 5% and traces sulfur, carbon, calcium, aluminium. A good deal of mish metal is used in magnesium-based alloy to produce bullet, shell, and lighter flint. Mixed oxides of lanthanoids are employed as catalyst in petroleum cracking. Some individual lanthanoids oxides are used as phosphorus in television screen and similar fluorescing surface. Okay. Next actinoids. Actinoids मतलब period 7 group 3. तो इसका भी पूरा नाम सिंबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना और ये ट्रेंड देख लेना ओके actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium, lawrencium. Most of the name after the name of the scientist. Okay. इधर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या स्पेशलिटी है भाई नेक्स्ट एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन लाइक लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन सेम इट इज आयनिक साइज में सिमिलैरिटीज आर देयर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बड़ा है लेकिन इसमें भी जनरल क्या होता है ग्रुप 3 का मेंबर है इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल वन बहुत ज्यादा इधर उधर का है ऑक्सीडेशन स्टेट ये टेबल में है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जनरल कैरेक्टराइजेशन कंपैरिजन विद lanthanoids. The actinoid metals are all silvery in appearance but display in a variety of structures. The structural variability is obtained due to the irregularities in metallic radii, okay, which are far greater than lanthanoids. Actinoids are highly reactive metal, especially when finely divided. Action of boiling water on them, for example, gives a mixture of oxide and hydride combination with most non-metals takes place at moderate temperature. Hydrochloric acid attacks all metal, but most are slightly affected by nitric acid owing to the formation of protective oxide layer. Alkali have no action on it. Okay, the magnetic property more complex than lanthanoids.
Although the variation in the magnetic susceptibility of the actinoids is the number of unpaired 5s electrons so roughly parallel to the corresponding result of the lanthanoids, the latter have higher value. Matlab lanthanoids are more magnetic property compared to actinoids. It is evident from the behavior of the actinoids that the ionization enthalpy of the early actinoids, though not accurately known, but are lower than that of early lanthanoids because इसमें अभी 5f आ गया है ना, तो इसका तो शील्डिंग प्रॉपर्टी और भी लो है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को निकाल फेंकना कोई it's not a big shot, okay, because nuclear charge is okay. So the 5f will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electron of the corresponding lanthanoids because of the outer electrons are less firmly held. They are available for bonding in the actinoids. Okay. With respect to different characters discussed, ये हो गया, ठीक है. तो अभी क्या है, showing close similarity with each other. Actually valency दोनों का ही तो stable valency 3 है, यही है, और contraction. अभी uses iron and steel are the most important construction material. Their production is based on the reduction of iron oxide. तो इसी के लिए actually सबसे ज्यादा use होता है chromium and manganese in analytical chemistry, in organic chemistry, in industry, everywhere. ओके सो देखो उसी का और थोड़ा वो जो कपल होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सेल होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो कपल उसमें यूज होता है. ये सब यूजेस थोड़ा देख लेना. कैटलिस्ट तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप लोगों को पता ही है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लार्जली यूजर्स कैटलिस्ट, वो देख लेना. ओके तो ये है आप लोगों का पूरा चैप्टर. फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सिल्वर यूज होता है, ये पूरा जो है ना, ये पूरा एक बार देख लेना. uses is very important. Construction, their production is based on the reduction of iron oxides, the removal of impurities and addition of carbon alloying metals such as chromium, manganese, nickel. Some compounds are manufactured for special purposes such as TiO for the pigment industry, MnO2 for use in dry battery cell. The battery industry requires zinc, nickel, cadmium. The elements of group 11 are still worthy of being called coinage metal, although silver and gold are restricted to the collection items, and the contemporary UK copper coins are copper coated steel. The silver UK coins are copper nickel alloy. Many of the metals and or their compounds are essential catalysts in the chemical industry. V2O5 acts as catalyst, the oxidation of SO2 in the manufacture of sulfuric acid. TiCl4 with aluminium methoxide, trimethyl aluminium forms the basis of the Ziegler catalyst used to manufacture of polyethylene. Iron catalysts are used in the Haber process for the production of ammonia from nitrogen-hydrogen mixture. Nickel catalysts enable the hydrogenation of fats to produce. In the Wecker process, the oxidation of ethine to ethanol is catalyzed by palladium chloride. Nickel complexes are used in the polymerization of alkyne and other organic compounds such as benzene. The photographic industry relies on the special light-sensitive properties of silver bromide. These all are the use. You point it out, okay? Then what will you do after this whole revision? You follow this NCRT exercise. I think only 37-38 questions are there. Exactly. 15, 30 and 38 questions are there. So you should solve this 38 question after full reading of the NCRT book. Then you do this, and then some year questions are there. You can do it. Write the formula of an oxoion of chromium. You can do it, and equal to its group number. Chromium का जो group number है उसी सब का oxoion. You can easily do that. आपको तो पता ही है ऑक्सोआयन में क्रोमियम का वैलेंसी होता है उसका ग्रुप नंबर, मैंगनीज का ऑक्सोआयन में भी वैलेंसी होता है उसका ग्रुप नंबर. Account for the following transition metal from large number of complex compound. You know that the lowest oxide of transition metal is basic, whereas the highest oxide is amphoteric or acidic. क्या acidic, क्या basic, क्या amphoteric, सब मैंने बोल दिया था. E0 value for Mn, this 3 plus to 2 plus couple is highly positive as compared to chromium 3 plus to 2 plus. Electronic configuration के हिसाब से आप लोगों को बोलना होगा. I have discussed already. Write the formula of the oxoion. Write one similarity and difference between chemistry of lanthanide and actinoid elements. You know that. How is the variability of the oxidation state of transition metal different from that of p block elements?
Out of C plus and Cu2 plus, which one is unstable in aqueous solution? Why? Orange color of dichromate ion changes to yellow when treated with an alkali. Why? All the equations you have to write. Okay. Chemistry of actinoid is complicated as compared to lanthanoids. Give two reason. You know that. Transition metals show variable oxidation state. You know that. Zinc, cadmium, mercury are soft metals. E0 value of this, again the same question repeat. Write one similarity and one dissimilarity between chemistry of lanthanide and actinoids. अगेन ये चार है, इसमें से कौन सा है एक्वस सोल्यूशन में मोस्ट स्टेबल कौन है, विच वन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज कलरलेस एंड व्हाई. आप लोगों को पता है अगर डी फुल है या डी हाफ फिल्ड है तो ये वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, या डी जीरो. ओके, नेक्स्ट कंप्लीट, आप लोगों को कंप्लीट करना है. मैंने कहा था ऑक्सीडाइजिंग वो जो इक्वेशन है KMnO4 और डाइक्रोमेट का, KMnO4 एंड K2Cr2O7, इसका जितना सारा इक्वेशंस है वेरी इंपॉर्टेंट. गिव रीजन अगेन. Fe3 प्लस के साथ मैंगनीज, ये भी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. आयरन हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन कॉपर. Scandium 3 plus is colorless in aqueous solution whereas titanium 3 is colored. वो तो D के वजह से होगा, आप लोगों को पता है. Next, transition elements and their compound acts as catalyst. Again manganese और copper का वो actinoids have show irregularities in their electronic configuration. Give reason. Transition metal form alloy. This is basic where that is acidic. वो हम लोगों ने पढ़े हैं उधर. पूरा पूरा NCERT, पूरा NCERT के बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. देखो Europium 2 plus a strong reducing agent. Transition metals form complex compounds. E0 values for zinc 2 plus का दोनों कपल का more negative than expected. ये भी हम लोगों ने पढ़ा. Actinoids show wide range of oxidation state. Then 2020 again show catalytic activity transition element. Separation of lanthanoid element is difficult. Zinc, cadmium, mercury soft again and again have low melting point. Write the preparation of the following, this to this, this to this. These are very important. All in NCERT, all are in NCERT. Okay, account for the following. This is colored whereas this is colorless. Chromium 2 plus strong reducing agent. Write two similarities between chemistry of lanthanide actinoids. Complete the equation. Write the balance equation for the preparation of KMnO4 from MnO2. इसको क्या बोला जाता है, पायरोलिसाइट. और बैलेंस इक्वेशन डाइक्रोमेट के लिए आयरन और टीन का जो इक्वेशन है, अगेन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग. कौन है 2023 में? देखो क्या आया, assertion reasoning. Transition metals show their highest oxidation state with oxygen, the ability of oxygen to form multiple bonds of two metal. Both are correct है ना. Which one among the following metal of 3D series has the lowest melting point? Zinc. Account of the following, again manganese के साथ copper, वही scandium and titanium. One is colorless, another has color. Actinoids has a large range of oxidation state. Write the chemical equation KMnO4 from MnO2. Account for the following, transition metal forms alloy. Cerium 4 is a strong oxidizing agent. Write one similarity and one difference between a lanthanoid actinoids. Again complete the following ionic equation. पूरा 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 NCERT छाप दिया है, पूरा पूरा ईयर क्वेश्चन में. Write the number of unpaired electrons in this. You know that how to write. Complete the reaction dichromate के साथ H2S का. Okay. Next, account the following. Mn2 plus is more stable than Fe2 plus towards oxidation to plus 3 state. Then copper has exceptionally positive standard reduction potential value. Then europium 2 plus with electronic configuration is a strong reducing agent. A transition element X has electronic configuration. This predict is likely to be oxidation state. Complete. मैंने कहा था KMnO4 ऐसे करके छोड़ दिया जाता है. This one is very important. Account 3D transition series. Zinc has the lowest enthalpy of atomization. Why? Cu plus ion is unstable. Why? Actinoids show more number of oxidation state than lanthanoids. Why? Why is again the difference. Complicated. Why? Then equation. Then देखो ये ग्राफ देखिए. Explain the reason why chromium has highest melting point and manganese has a lower melting point. वही तो रीजन है, आप लोगों को पता है. Which property of transition metal enables them to behave as catalyst? High melting point, high ionization enthalpy, alloy formation, or variable oxidation state? We know that. Cerium 3 is easily oxidized to cerium 4. Comment.
अगेन वही वायली वैल्यू नेगेटिव कॉम्पोनेंट नेबरिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स वही ठीक है. Which element of 3D is the lowest enthalpy of atomization? Why? What happens when sodium chromate is acidified? What happens when zinc, cadmium, mercury are soft metals? Why? Why is permanganate titration not carried out in the presence of HCl? Zinc, cadmium and mercury are soft metals. Why? Again and again देखो आ रहा है. Why is अच्छा ये थोड़ा repeat हो गया है. The lower oxides of transition metal are basic, whereas the higher are amphoteric or acidic in nature. Give reason. Why zinc is not regarded as a transition element? What is lanthanide contraction? What is first ionization enthalpy of chromium lower than that of zinc? Okay. Why are transition elements good catalyst? Compound of transition metals are generally colored. Give reason. Out of KMnO4 and K2MnO4, which one is paramagnetic and why? Complete the following ionic equation. ये सब है. कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. ये 2025 में आया था. ये दोनों सब बुक में है. एसिडिक ऑक्सीडेज सल्फाइड 2 किसमें कर रहा है? सल्फेट में कर रहा है. आप लोगों को पता है ये पूरा सीरीज है. कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव दिस. व्हाई? व्हिच एलिमेंट इज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हाई? जिंक 2+ सॉल्ट्स आर कलरलेस. व्हाई? दिस ऑल आर पूरा एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं है. Examine the following observation. Transition elements generally form colored compounds. Zinc is not regarded as transition element. Complete and balance the following chemical equation. 8MnO4 minus. ये जो है ये तो पूरा है सब. D4 series में chromium 2+ is strongly reducing while Mn3+ is strongly oxidizing. Why? Write two consequences of lanthanide contraction. Which element of 3D series has lowest enthalpy of atomization? Why? Complete and balance. Again, standard reduction potential manganese का value higher negative in comparison to neighboring D block elements. What is lanthanide contraction? Zinc, cadmium and mercury are soft metal. This is very important. Again, complete. So थैंक यू ऑल. हम लोगों का ये पूरा एक सेशन था रिवीजन. डी एंड एफ ब्लॉक का पूरा एनसीईआरटी रिवीजन था. आप लोगों को मैंने दिखा दिया है कि ईयर क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी के ऊपर ही. सो प्लीज डीएफ ब्लॉक एनसीईआरटी से पढ़िए. पूरा एनसीईआरटी से हर चैप्टर पढ़िए. लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक को लेके इतना मत डरिए. डोंट बी सो स्केयर्ड बिकॉज ओनली क्वेश्चन विल कम फ्रॉम एनसीईआरटी पोर्शन. सो डू रिवाइज योर एनसीईआरटी वंस अगेन. स्टडी द एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड स्टडी द PYQs. अगर ये सेशन आप लोगों के पास है तो पूरा PYQ इज हियर पूरा. ठीक है. लास्ट आई थिंक 10 years का पूरा क्वेश्चंस आर ऑल क्वेश्चंस आर देयर. सो यू कैन डू इट हियर फ्रॉम हियर. आई नो यू हैव लॉट्स ऑफ बुक्स फ्रॉम देयर आल्सो यू कैन डू. बट इट्स माय सजेशन. फॉलो द एनसीईआरटी बुक, then NCERT exercise, then PYQ. Done. You will get 7 marks by this strategy only. Okay, so thank you. I have another session after a few minutes with organic chemistry. So stay tuned. थोड़ा पानी पी के आओ, रेस्ट ले लो, फिर join me again once again. Bye.